Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll be continuing the last video, chapter number 1 of class 11th, what is psychology. So let us revise what we did in the last video. We were doing the definition of psychology, its three components that are mental processes, experiences, behaviors. Afterwards, we did the psychology as a subject or as a discipline, as natural science, as social science. Moreover, we discussed the difference between brain and mind. Now we'll be starting with evolution of psychology. So, the evolution of psychology can be traced way back to 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. Okay, evolution का मतलब होता है कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे वो ओरिजिनेट हुई, साइकोलॉजी कैसे ओरिजिनेट हुई. तो वो कब हुई थी? यू शुड रिमेम्बर दिस ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट. 1879. ओके, 1879 में देयर वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी which was established in Leipzig, Germany by who? By William Wundt. This is a very important fact you need to know. Okay, so एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी कब हुई? 1879 में. कब हुई, कैसे हुई? जब विलियम वुंट ने एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी, जो कि सबसे पहली ऐसी लेबोरेटरी थी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, वो हो गई आपकी स्टैब्लिश इन लिप्जिग, जर्मनी. आगे वो बोल रहा है he was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze building blocks of the mind. ठीक है. सो विलियम वुड बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे अपने, मतलब कि कॉन्शियस स्टेट में मन लोगों का कैसे एक्सपीरियंस होता है उनको स्टडी करना, माइंड के बारे में स्टडी करना, हाउ डज इट वर्क्स, तो ये सब करना था उनको. ठीक है. आगे बोल रहे हैं ड्यू टू द फैक्ट that psychologists during Wundt's time started analyzing the structure of the mind through introspection. They were also called structuralists. Okay. Here they are saying कि जिस टाइम पे ये सब हो रहा था, जब विलियम वुंट ने ये सब करना शुरू किया था, उसी टाइम पे जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, उनको उसको समझने के लिए दे आल्सो स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्शन. नाउ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? Introspection was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. Introspection is a very common term you should know since I am telling you. एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे आप अपनी सब्जेक्ट से या जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, यस, उससे आप डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हो उनके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में. ठीक है. और स्ट्रक्चरलिस्ट क्या होता है? जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को पढ़ते हैं, दे आर स्ट्रक्चरलिस्ट. फाइन. आगे क्या बोल रहा है? लेटर ऑन दिस अप्रोच वाज टेकन ओवर बाय अ फंक्शनलिस्ट अप्रोच. पहले आई स्ट्रक्चरलिस्ट के ऊपर, फिर आई फंक्शनलिस्ट अप्रोच. और फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो आपकी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेम्स. And the functionalist approach utilized the study of the human mind instead of focusing on the structure of the mind. Yes? Okay. तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, देन बिहेवियरिज्म, गेस्टोल साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. ओके. ये सब क्या है? ये एक तरीके से साइकोलॉजी का एवोल्यूशन की ऐसे ऐसे स्टडीज हुई, तो इसके स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं इनको. ठीक है. इन सभी को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं. एंड दे आर
very important in according to your exam point of view. They will ask you explain the schools of psychology or the theories or approaches of psychology. Then you have to understand their basic meaning and you have to learn and write the answer. सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलिज्म. It was proposed by William Wundt and structuralism is considered the oldest school of psychology. सबसे पहला जो oldest school of psychology था, जो सबसे first number पे आता है, that is structuralism. And it was proposed by who? William Wundt. So these two things you should know, that William Wundt proposed this school of psychology and it was one of the oldest school of psychology. Okay. Now, what was the interest of structuralists? Structuralists were interested in the analysis of the human mind and its structure. Structuralist का हमने पीछे भी पढ़ा था. यही रोल है कि they are interested in knowing how the mind physically or how the structure of the mind is. They were interested in conscious experience and wanted to study the building blocks of the mind. ठीक है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था वही चीज है. They use the introspection method to study mental processes and experiences. तो ये स्ट्रक्चरलिज्म में आपको इतना ही मेन दिख कर आना है. ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. देन कम्स योर फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म क्या होता है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी प्रपोज्ड बाय विलियम जेम्स. अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, विलियम जेम्स. They focused on what the mind does and the function of consciousness in adjustment to the environment. ठीक है, उसका फंक्शन पढ़ना था. स्ट्रक्चरलिस्ट ने स्ट्रक्चर को पढ़ा, आपको फंक्शनलिज्म में फंक्शन ऑफ द कॉन्शियसनेस को पढ़ा के जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, consciousness is an ongoing mental process that cannot be broken down into parts. Okay, very important line. Okay, next, behaviorism. This is the third school of psychology which was proposed by John D. Watson. John D. Watson, who viewed psychology as a science of behavior in terms of stimuli and responses. ठीक है, कैसे साइकोलॉजी को he used to define? In terms of behavior. Since the name of the school of psychology is behaviorism, so here they will focus on behavior. Yes. Okay. Our response to stimulus in the environment are the basic building blocks of our personality. Yes. किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी कुछ भी हो रहा है, आपका जो रिस्पॉन्स है वही आपकी पर्सनालिटी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को बताता है कि आपकी कैसी पर्सनालिटी है. Watson emphasized on observable and verifiable response to stimuli and he was profoundly interested in the study of learning. Yes. Gestalt क्या होता है? Very important. It is very important thing. This school of psychology was in contrast to structuralism and it was founded in Germany by Wertheimer, Kohler and Koch. ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्ट्रास्ट में. ठीक है, जर्मनी में हुआ था ये बाय these people, Wertheimer, Kohler and Kofka. Important. Okay. It primarily focused on perceptual organization of what we see. जैसा हम देख रहे हैं उसके ऊपर वो बेस्ड है, उस पे वो फोकस है. फॉर एग्जाम्पल, वी लुक एट द वर्ल्ड, our perceptual experience is more than its components. Okay, forget about this. Let's talk about another example. That is, when we look at a chair, we do not see four wooden legs, but we recognize it completely as a table. Okay. किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हो तो आप उसको कैसे देख रहे हो?
in parts or as a whole. Yes, Gestalt psychology भी यही बोलती है, we see as a whole. जैसे कि एक चेयर को अगर आप देख रहे हो तो आप चेयर के ऐसे नहीं देखोगे उसके 4 वुडन लेग्स हैं. यस, आप सीधे उसको परसीव कर रहे हो एज अ कंप्लीट टेबल. So this was Gestalt psychology. All it says is that we study the whole rather than its parts. Okay. Yes. Psychoanalysis. It is very important. It was given by your Dr. Sigmund Freud. Sigmund Freud, very well. According to this psychology, school of psychology, human behavior is viewed as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts. Very important. Okay. Practical implementation of the school of psychology help us to understand and cure psychological disorders. Okay. इधर आपका जो साइकोलॉजी है, स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, that is basically your based on unconscious desires and conflicts. And what are those things which are not completely aware at present? Yes, एक तरीके से डिसऑर्डर्स को समझना और उन्हें क्योर करना, दैट कम्स अंडर साइकोएनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में. यस. ओके. ह्यूमनिस्टिक में क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट. कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो इसके वो हैं, द वंस हु proposed it. It laid emphasis on the free will of human beings and their actions are not predetermined by any force. Okay. According to this school of psychology, human beings strive to grow and unleash their true potential which lies within them. Okay. All human beings have an innate tendency to attain a state of self-actualization is very important. Self-actualization means, okay, write down. Self-actualization means reaching to the highest potential. Yes, you should know. जब बंदा अपनी पूरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है एकदम ऊपर वाला, योर एक यू शुड नो द मैस्लोज हायरार्की. उसमें क्या होता है? I will discuss Maslow's hierarchy which comes under humanistic perspective. उसमें सबसे ऊपर वाले लेवल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं. Okay? So basically humanistic perspective, it focuses on the human beings, उनके actions, उनका एक तरीके से how they are growing, how they are unleashing their true potential. ये सब कुछ humanistic perspective में आता है. Last is cognitive perspective. It was proposed by Jean Piaget and Yogsi. Okay. This approach is considered as a fusion of the Gestalt approach and structuralism. Gestalt approach हमने पढ़ी थी और structuralism हमने पढ़ा था. उन दोनों का फ्यूजन, दैट मीन्स उन दोनों का कॉम्बिनेशन इस अप्रोच को बोला जाता है. ये बात याद रखनी है, इट इज इम्पोर्टेंट. ओके. Then comes, it lays emphasis on cognition, which means thinking, understanding, perceiving, memorizing, etc. They view the human mind as an information processing system, just like a computer and mind receives, processes, transforms, stores, and retrieves information. With this, we have covered your schools of psychology.
Okay. Write down the important questions. What is the important question? I'll tell you. Explain the evolution of psychology. Explain the evolution of psychology. How it was started, by whom and when. For about 4-marker question. You need to explain the evolution of psychology in 4 marks, and you need to explain the first laboratory experiment. Then you have your question. Explain all the schools of psychology. This is your second question, which is of your 10 marks. Okay. Explain all the schools of psychology. Afterwards, third question will be your explain Gestalt psychology using an example. And one more question, that is explain self-actualization according to humanistic perspective. Important question. And the last question is explain the approach, which is a fusion of the Gestalt approach and structuralism. Okay, these are the important questions और आपको ये लिखने हैं. You have to learn them. Afterwards, when I will complete this chapter, or I mean within 2 to 3 videos, I will complete this chapter, and afterwards, I will be giving a revision of the chapter, full chapter, properly. And after the revision, we will do MCQs of this chapter. And after MCQs, important MCQs, we'll start with the new chapter. Okay. So, I'll see you in the next video. Okay. Yes. Bye.